So this is the question. The following results have been obtained during the kinetic studies for the of the reaction 2A plus B, giving you C plus D. So we have different 1, 2, 3, 4, 5 experiment. They're asking determine the rate law. Okay. So when they're asking determine the rate law, the rate law तो आप लोगों को पता है R will be equal to K into the concentration of A to the power B into concentration of B to the power Q. अब यहाँ पे R ही रहेगा हमेशा. K will be also present. A and B will be present because A and B are the reactant. You have to determine what is P and Q using this particular information, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था. Got it, guys? सुनो, याद है आप लोगों को? आयाना, मरीम खातून, सिद्रा एंड राबिया. Yes, guys, you remember? Yes ना? ठीक है. प्लीज कोई भी इसको देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पी और क्यू नहीं डिटरमाइन करेंगे. ठीक है. दिस इज नॉट यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है. आप रिएक्शन देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकते. यू हैव टू लुक एट द एक्सपेरिमेंटल डेटा. ओके. सो इफ यू डोंट रिमेंबर, प्लीज रीरीड वॉट एवर यू हैव डन इन द लास्ट क्लास. लास्ट पार्ट नहीं कराया था हमने. ठीक है. उससे आप लोग प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू पी एंड व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्यू. Sorry, order with respect to A and order with respect to B. कितना P and Q आप find करके send me the answer on WhatsApp and let me know. ठीक है. चलिए कीजिए. Also let me know if you get stuck somewhere. Okay.
आयशा, जो लोग थोड़ा सा लेट आए हैं, दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू डिटरमाइन द पी एंड क्यू. ओके, also but काफी देर हो गया ये दिया. So I will give you guys 3 more minutes and then send me whatever you have done. Also guys, I have started the focus mode on. Can you please have the video on? Okay, fine, Rabba. No, not a problem. ठीक है. बाकी लोगों का क्या हो गया? मरियम पार्कर, मरियम खातून, राबिया एंड सिद्रा. सिद्रा, वेर इज आमना? आमना नहीं आई है. She won't be joining, sir. Sorry, She won't be joining today. she won't be joining today. Yes, sir. Okay, guys, time is up. Can someone please send me whatever they have done? Send me on WhatsApp whatever they have done. Fine, not a problem, Parker. I just want to see how you are doing. Uh, okay. इतनी साफ से असल में आया नहीं है आपका. You have taken the initial first two reactions. ठीक है, fine. अच्छा, ओके, राबिया.
ठीक है। अच्छा, सी जो प्रीवियस किया था, चलिए ठीक है, देखते हैं इस रिएक्शन को एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। One thing that I recommend all of you guys to do is that first of all you keep your pens aside. पेन अभी रख दीजिए, प्लीज ध्यान से सुनिए, ठीक है? All of you have your pen down. Yes sir, please tell me. हमने पेन रख दिया? Yes, पार्कर, मरियम खातून, रबा, सिद्रा, हाँ जी, yes ना? ठीक है, ध्यान सुनिए. See, this very first tip that I will give you guys is to have the same powers of 10. Here it is -3, here it is -2, here it is -1, here it is -2, right? So you should be able to have all the powers of 10, like same powers of 10. जैसे 6 to the power -3 है यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? If I want to do -2 को -3, तो I can write this as 7. This will be written as 72 into 10 to the power -3. करेक्ट है गाइस? इस ऑफिशियल नहीं समझ में आया आप लोगों को? यस ना? बोलिए. और ये क्या हो जाएगा? दिस इज 288. दिस विल बिकम 288 into 10 to the power -3. Correct? This will become 24 into 10 to the power -3. Correct? किस ऑफिशियल में गाइस? हाँ यार, आप प्लीज बोले. पार्कर, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल. पार्कर, कैन यू ट्राई स्पीकिंग? ओ नहीं पार्कर, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है आपकी. इफ यू आर यूजिंग अ माइक ना, अगर आप ईयरफोन यूज कर रहे हैं तो ईयरफोन हटा दीजिए. अगर ईयरफोन नहीं यूज कर रहे तो एक नया ईयरफोन लगा के देखिए, ठीक है? व्हाट अबाउट अदर्स? आयशा, रबा, राबिया, सदरा, आपको समझ में आया ये? सर नो? आयशा, रबा, राबिया, आया ना? ठीक है. अरे भाई, तुम लोग को नहीं आया क्या? रबा, राबिया एंड सिद्रा. व्हाई आई एम नॉट गेटिंग एनी यस सर नो सर फ्रॉम? आया ना? The second power, it will be -2 power. So the second, it will be -2 power, right? नहीं ना, 72 कर दिया ना हमने, तो -3 हो जाएगा, राइट? हाँ पार्कर. नहीं, मरियम खातून, मरियम खातून. सर 2.88. सर ये तो 2 किया तो -3 होगा ना यार. माइक ऑन करके बोलो भाई, ये तो आप लोगों को माइक क्यों नहीं चल रहा? मरियम खातून, मरियम खातून, खातून, खातून. Sir, can you hear me? You did not get it? Yes, sir, I got it. You got it? Yes, sir. Yeah. Sir, but in the last one also 2 number is there, so it should be अरे minus. नहीं, अरे भाई भाई भाई, एक सेकंड यार, सुनो जरा. इसको हमको -3 करना है, ठीक है? तो एक बार राइट शिफ्ट करेंगे ना, तो डेसिमल पॉइंट एक बार राइट शिफ्ट होगा. इट इज नॉट डिपेंडेंट कि यहाँ पे कितने नंबर्स है हमारे पास, उससे हमको कोई मतलब नहीं. हमारे पास यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना? Yes, sir. समझ आ रही है? हमको क्या करना है, आप देखो, देखिए हम समझ रहे हैं आपकी दिक्कत, बट स्टिल -1 को -3 करना है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को 2 बार जंप करा देंगे, सही है? Yes, sir. है ना? हम इस वजह से 2 बार जंप नहीं करा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 88 है. गॉट इट? Yes, sir, I got it. समझ में आ गया ना? ठीक. आप वही समझ रहे थे ना, वहां पे 2 डिजिट है तो 2 बार करा रहे हैं हम. मरियम खातून, ठीक है. हम लोग को मेन क्या करना है, 10 to the power -3 करना सब में, है ना? उसी लिहाज से आई विल शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट्स नाउ. चलिए बताइए, लेट अस सपोज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द, बताइए कौन सा एक्सपेरिमेंट ले, जल्दी कोई भी बोलो, माइक ऑन करके. दोस्त हैव डन द क्वेश्चन. हाँ बोलिए. पार्कर, आप तो मत बोलिए, आप चैट में लिखिए, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है. बोलिए गाइस, बोलिए. दोस्त हु कैन स्पीक, दोस्त हु कैन राइट इन चैट, जो भी करना है जल्दी करो भाई. राबिया, रबा, राबिया तो मुझसे नहीं लिख पा रही. सिद्रा, सिद्रा, Sir, first and second. फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है. फर्स्ट लेते हैं और सेकंड लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या सेम है भाई? ना ए का कंसंट्रेशन सेम है, ना बी का कंसंट्रेशन सेम है. क्यों लेना है फर्स्ट और सेकंड? ये कल हमने पढ़ाया था आप लोगों को, आप लोग रिवाइज करके आना चाहिए. पहले में कंसंट्रेशन ऑफ ए सेम लेना है और बी इज डिफरेंट, देन वी गेट ऑर्डर ऑफ बी. ये तो हमने पॉइंट लिखवाया था आप लोगों को. कंसंट्रेशन एक का सेम लेना है और एक का अलग लेना है. फर्स्ट और सेकंड क्यों लेना होगा?
याद आया कि नहीं याद आया भाई आप लोगों को, बोलो भाई। आया ना, ठीक है। पार्कर इज सेइंग 4 and 1, ठीक है, 1 ले लिया हमने और 4 ले लिया, सो व्हाट इज सेम, द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज सेम एंड ए इज डिफरेंट, तो ए का पावर निकल जाएगा, ठीक है। और यहीं पे करेंगे हम लोग, यू डोंट नीड एनी कैलकुलेशंस, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, प्लीज कीप योर पेन्स असाइड, प्लीज कीप योर पेन्स असाइड, all of you guys are having your pen aside, yes or no, please tell me, बोलो यस सर नो सर, माइक ऑन करें सब कोई, माइक ऑन करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, these type of question will ask इन एमसीक्यूज ऑल्सो, तो आप लोगों को जल्दी करने आना चाहिए, ठीक है। माइक ऑन करें बाकी गाइस, आयशा, हाँ देखिए, हम ए के कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, कितनी टाइम्स बढ़ा रहे हैं बताइए, we're increasing the concentration of A how many times, 3 times. कितनी टाइम्स, 3 times. यार 0.1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 आएगा, किसी को नहीं पता, 5 टाइम्स, मार्कर क्या लिख रहे हो यार, ये तो बहुत ही आसान है ना, 0.1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 आएगा, 4. नो आइडिया, 4 मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, सिर्फ 4 मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये तो आना चाहिए भाई, बेसिक मैथ्स है, 0.4 नहीं, 0.4 अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा देन यू विल गेट 4 और आपके पास 2 डेसिमल पॉइंट हो जाएंगे, देन यू विल हैव टू राइट 0.04, ठीक है। so you don't have to multiply 0.4, you have to multiply 4, 0.1 into 4 will give you 0.4, बेसिकली हम पूछ रहे हैं 0.4 डिवाइड बाय 0.1 कितना होगा, 4 टाइम्स, कितना बेसिक मैथ्स यार, आप लोग पता नहीं किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, क्या लिखा है 0. पार्कर, तो यार कहाँ है आप लोग भाई, नहीं क्या है मन किसी को पढ़ने का, उल्टी सीधी यार सोच तो ले एक बार, क्या लिख रहे हैं आप लोग, 0.1 इंटू 0.4 कितना होगा आंसर, पार्कर बताओ तो जरा, पार्कर व्हाट विल बी द आंसर इन द चैट, आप चैट में बताइए, माइक में आपकी आवाज नहीं आ रही है, जीरो पॉइंट जीरो फाइव यार, यू गॉट इट ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी 0.4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। छोड़ो यार, आपसे नहीं होगा ये, आप लोग टाइम वेस्ट कीजिएगा अपने एग्जाम में, तो ये मैथ्स है, इफ अगर आपको ये मैथ्स नहीं आ रही है तो फिर आप थोड़ा सा सोच लो कि कैसे कैलकुलेट करना जल्दी जल्दी, ठीक है ना। आप लोग वही चीज करें, 1 और फर्स्ट और फोर्थ रिएक्शन ले लेते हैं, 4 डिवाइड बाई 1 कर लेते हैं, ज्यादा झंझट क्यों पालना है ना। फोर्थ रिएक्शन में यू विल राइट द रेट, रेट कितना है आपके पास, जनरल रेट इक्वेशन लिख लेते हैं, R4 will be equal to the rate constant into the concentration of A, फोर्थ में जो है टू द पावर P and concentration of B जो फोर्थ में है, फोर्थ रिएक्शन में टू द पावर Q, this will be divided by R1, this whole thing will be divided by rate constant K, concentration of A जो फर्स्ट केस में है टू द पावर P and the concentration of B जो कि फर्स्ट केस में टू द पावर Q, so R4 is equal to 24 into 10 to the power minus 3, 24 into 10 to the power minus 3 divided by 6 into 10 to the power minus 3, 6 into 10 to the power minus is equal to K. Concentration of A in the fourth reaction is 0.4. I will write 0.4 to the power P, and concentration of B in the fourth case it is 0.1. So I will write 0.1 to the power Q divided by the rate constant K into the concentration of A in the first reaction it is 0.1. So I will write 0.1 to the power P, and the concentration of B in the first reaction is again 0.1. So I will write 0.1 to the power Q. Now here we can see that 0.1 to the power Q and 0.1 to the power Q will be cancelled. K and K will be cancelled. 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 will be cancelled. 6 and 24 will be cancelled by 4. After that, we will write here 4. We'll write here 4. This will be equal to 0.4 divided by 0.1 whole to the power of P. Now we can say that 0.1 is 4 times of 0.4. So the reaction equation will become 4 is equal to 4 to the power P. 4 to the power 1. Now, when the bases are same, we can say that the powers are also same, and that is why P is equal to 1. Chapi, right? Chapi. You guys are not revising.
हमको बहुत दुख हुआ इस बात का कि मतलब सेम चीज आपको कराया हुआ है पिछले क्लास में और आप नहीं आंसर कर पा रहे, इट्स रियली बैड। वॉट एवर बी द रीजन, कुछ भी रीजन हो जाए उसका, ठीक है ना, आपके स्कूल में एग्जाम चल रहे हो, आपके स्कूल में बहुत ज्यादा होमवर्क दिया हुआ हो, आपके स्कूल में असाइनमेंट्स दिया हुआ हो, प्रैक्टिकल नोटबुक कंप्लीट, कुछ भी रीजन हो, लेकिन आपको पिछला क्लास तो रिवाइज करके आना चाहिए। जो भी रीजन हो, बहुत अफसोस की बात है, हमको तो बहुत दुख है इस बात का कि यू गाइस आर नॉट रिस्पेक्टिंग, कि हम जो टीच कर रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, उसको थोड़ा सा तो आप रिस्पेक्ट करें कि एक बार रीड दोबारा पढ़ के आ जाए, कि हमको दो दो बार नहीं पढ़ाना पड़े सेम चीज। रियली डिसअपॉइंटेड। रेज योर हैंड वंस यू आर डन। Rabba and Rabia waiting for you guys. Rabia तो नहीं लिख रही। Rabba, are you able to write? I think you are also traveling somewhere, right? Rabba, will you be? Are you writing? Yes, sir. Okay. Rabba, जल्दी लिखो. But guys, you can start copying from here. Or so we have got the P value. I need the Q value. So for Q value, I will keep the concentration of B different and AC. So ये जो same है आपके पास 0.3 and 0.3. So these are the two reactions 2 and 3. So 2 and 3 में I will write 3 divided by 1. So similarly, I will write rate for third is equal to rate constant K into the concentration of A to the power P for the third case, B to the B of third case to the power Q divided by R1 whole divided by the rate constant K, the concentration of A to the power P of third case, B to the power Q of third case, and R3, the rate third is 288 into 10 to the power minus 3 divided by 72 into 10 to the power minus 3 is equal to K into the rate constant, A3 is 0.3 and to the power P, B3 is 0.4 to the power Q divided by अच्छा ये A1 होगा, सॉरी माय बैड, A1 होगा है ना, हाँ अब ठीक है A1 में A2 होगा, माय बैड A2 होगा ना, 0.3 72, हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है A2, so rate constant K 0.3 to the power P and then 0.2 to the power Q. K and K will be cancelled, 0.3 to the power P, 0.3 to the power P will cancel, 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 72. If you multiply 4, you will get 288. ठीक है, so
Now what is remaining? 4. It is equal to 0.4 divided by 0.2, 4 to the power q, and 2 times. So here we have 4. It is equal to 2 to the power q. So I will first of all make the bases same. But in order to make the base same, I will write this as 2 to the power 2 is equal to 2 to the power q. So when the bases are same, the powers are also same. We'll say that 2 is equal to q. Yeah, q is equal to 2. We have got the q is equal to 2. अब उसके बाद हमने बोला this is now the rate law expression will be equal to r is equal to rate constant k to the into concentration of a to the power 1, है ना, and b to the power 2. Then they are asking calculate the rate constant. तो rate constant के लिए आप पहला equation लिख लीजिए, उसमें plug in all the values. So we have 6 rate is equal to 6 into 10 to the power minus 3 is equal to k. Concentration of A is 0.1, concentration of B is 0.1 square. So I can write k will be equal to 6 into 10 to the power minus 3 divided by 0.1 का क्यूब हो जाएगा, राइट, 0.1 का क्यूब. So ये तो आपका वही आ जाएगा 6 into 10 to the power minus 3. 0.1 का क्यूब भी 10 to the power minus 3, so it will be equal to 6, and according to the units it will be equal to mole L to the power minus 2 L square second inverse. ठीक है, चलिए please copy this down. Raise your hand once you're done. Waiting for Mariam Parker, Rama and Sidra. Waiting for Parker. Rama, you are done. Rama, write it fast. Rama, I'm waiting for you. रब्बा कितना बाकी है? इस रब्बा You are done. तो आप हाथ रेस कर दीजिए ना रब्बा. You should raise hand ना. ठीक है, चलिए. Write the topic, rate constant.
that is K. Okay, so this is the rate constant K. So what is the definition? Please write. It is defined as the rate of reaction when concentration of each reactant is 1 moles per liter. Rate constant is also known as specific reaction rate. Okay. Okay. The rate law expression says that a rate of a reaction is equal to the rate constant that's multiplied by concentration of A to the power P, concentration of B to the power Q, or any other reactant also. So if I have each of the reactant as 1 mole, 1 mole, 1 mole, and all of the जितने भी reactants हो जाए, तो सब हमने 1 mole लिया अगर, so 1 to the power of anything will be still 1. तो आपका उस time the rate of the reaction will be equal to the rate constant itself. ठीक है, so उसी तरह से डिफाइन किया जाता है whenever we have a proportionality constant. जिस साइड में proportionality constant रहता है उस साइड के वेरिएबल्स को 1 रख दिया जाता है and then we define that constant. So rate constant is जब A का भी concentration 1 हो जाए, B का भी concentration 1 हो जाए, तो जो rate होगी that will be the rate constant. Is that clear? Yes or no? Please tell me guys. क्या बात समझ में आई आप लोगों को? जल्दी बोले. Yes. अरे बोलो यार, क्या है भाई? आयशा, Yes, सिद्रा, sir. मरियम खातून, रबा. ये पार्कर Yes, जी क्या sir. आपको दी? Thank you very much. Yes, sir. ठीक है, फाइन. पार्कर आप अगर ना बोले तो कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है कि आपका माइक काम नहीं कर रहा है. ठीक है पार्कर, ओके. अब ज्यादा टेंशन ना लें. राइट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट. Number 1 is it gives an idea about the speed of reaction greater the value of K, greater the value of K, that is rate constant, faster is the reaction. Faster is the reaction. Second, different reaction will have different values of K. That is rate constant is independent of the concentration of reactant. Fourth is rate constant changes with change in temperature. ठीक है, आई होप ऑल दी पॉइंट्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. बहुत ज्यादा किसी को, हाँ, एक चीज जो आपको याद रखनी बहुत ही ज्यादा अच्छे से, दैट इज डिफरेंट रिएक्शन. अलग अलग रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा ना, दे विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट. ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. अनदर थिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक इनटू ग्रेट डिटेल is the fourth point, that rate constant changes with temperature. So how the temperature affects the rate constant, वो बिल्कुल आखिरी पार्ट है आपके केमिकल रिएक्शंस का. ठीक है, चलिए write this down. Raise your hand. Raise your hand नहीं, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन.
It is denoted by small n. Please write, it is defined as the sum of powers of concentration terms in the rate law expression. So R will be equal to A into the concentration of A to the power P into B to the concentration of power Q. तो order या फिर जो n होगा ना, order of reaction will be equal to P plus Q. ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था. इसमें कुछ लिखिएगा रिमार्क्स. The first point that is we have seen in the great details with the help of different numericals is that it is experimentally determined. ये आपको reaction लिखा हो उससे पता नहीं चलेगा. You have to do some experiment, calculate the rate, then only it can be determined. The first point, it is experimentally determined. Second is it can be zero. Positive, negative, or fractional. Third point, it determines the rate of reaction. Both it changes with temperature, pressure, etc. And the fifth point is very important. It may or may not be same as stoichiometric coefficients. Now you can raise your hand once you're done writing. If you want me to scroll up, you can have all of these points. Raise your hand once you're done writing. Is it fine now, Partha? No. What about others? Am I audible properly? Huh, Aisha? Yes, sir, you are. Aisha, Sidra? बोलिए ना, बोलिए. Complete कीजिए sentence, please. I can't hear it. Aisha? You can't hear me. What about Aisha? Aisha, can you? Yes, Aisha, you can. Yes, I can. Aisha can hear you properly. What about Rabia? Rabia, can you hear me properly? Yes, I can hear you. During the class, there was no issue in listening to my voice, right? No, sir. Okay, so those who cannot hear my voice, I'm really sorry. आपके end से कुछ problem है. Parker, is it fine now? Yes, Parker. Okay. वो कभी-कभी आपके connection की वजह से हो रहा होगा because
अगर मेरा वॉइस कम होगा ना तो हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे, बिकॉज किसी को समझ में नहीं आएगा, है ना। If everyone is not complaining, that means my voice is fine. Acha, keep your hand raised if you're done, please, guys. If you are done, please keep your hand raised. I'm waiting for Aisha, Rabah, and Rabia is not right today. Waiting. Acha, Aisha is done. Rabah is also done. Thank you, guys. Thank you very much. My voice is breaking now. Is it breaking, guys? Other guys, tell me. Is it breaking? No, sir. No, sir. Okay, thank you very much. हाँ ठीक है, देखो यार, मेरा वॉइस अगर हम देखो हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे। अगर किसी एक आदमी को दिक्कत होगी ना तो हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। मतलब एक आदमी को नहीं, अगर मेरे तरफ से दिक्कत होगी तो सबको नहीं सुनाई देगा। तो आप लोग चिंता फ्री रहिए, आप अपने तरफ से कुछ एडजस्टमेंट कीजिए। नाउ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इज यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। व्हाट इज यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट? इसमें ध्यान दीजिए, वी हैव टू सी what is the unit of rate constant if the order is 1, or if the order is 0, or if the order is 2, and so on. Okay, so in general we will also see, but specifically you have to see for only 2, and you have to memorize this conclusion, the result for the 2 order, the 0th order and the first order. In 2 order के लिए आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। You will understand it, and after that you are also going to memorize the results. इसके लिए जो कुछ टिप्स हैं इनको आप सबसे पहले मेरे साथ साथ लिखिए। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज एज यूनिट। क्या यूनिट होती है रेट ऑफ रिएक्शन की? इट इज मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसंट्रेशन इज टेकन एज moles per liter. If gaseous species are present, then ATM is taken as unit. ठीक है, ये 3 चीज के बारे में आपको थोड़ा सा समझ के रखिए। अब उसके बाद देखिए एंड इजीली हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं। आपका आवाज हाँ जी बताइए। बहुत लो जा रहा है, फिर आ रहा है, लो होकर आ रहा है इसे। हाँ, एक सेकेंड देखिए, हम इसमें क्या करें आप बताओ ना। राबिया, ऐसा हो रहा है क्या? टेल मी राबिया, बीच बीच में लो हो Yes, रहा है, हो जा रहा है, बीच बीच में I'm लो हो जा रहा facing है। the same. अच्छा तो कुछ Yeah. बोलिए ना, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं आप। आयशा, व्हाट अबाउट यू? Yes. आप कुछ बोल ही नहीं रहे। हाउ अबाउट नाउ? एनी बेटर? टेल मी गाइस। चलिए, आई एम Yes, sir. गोइंग It's like that. I'm going to read a few points, है ना, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। Remarks: it is experimentally determined. It can be 0, positive, negative, or fractional. It determines the rate of reaction. It changes with temperature, pressure, etc. It may or may not be same as the stoichiometric coefficient. Everything was fine? बताइए।
Yes, sir. Now it's fine. ठीक है, फाइन. So we have these 3 points. इसी points के basis पे हम लोग सब कुछ समझेंगे. So first of all, we are going to have the zero order reaction. ठीक है, so don't write anything. Just listen and answer me, guys. Okay, zero order reaction. Please have your mics on and tell me, in zero order reaction, if I have reactant A that is giving you product P, and here you are having the rate is R is equal to the rate constant K into the concentration of A. What will be the power of A here? Tell me, guys, if the order is zero, what will be the power of A? What will be the power of A? 0. Zero, correct, very good. It will be zero. Okay. So I can write the rate constant will be equal to the rate of reaction, correct? A zero हो गया तो anything to the power zero is equal to 1, K into 1 will be equal to K. बोलो yes or no? Yes, Anything sir. to the power zero will be equal to 1, and 1 into anything will be the 1 into K will be K. So I can write K is equal to rate of reaction. Now I can also write K, जो K का unit होगा, unit of K will be equal to unit of rate of reaction. Yes or no? Please tell me. बोलो भाई. Because both of these things are equal, so I can write K will be also having the unit mole per liter per second. Is it clear? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. See next. Then we are having, don't write anything, just listen to me. First order reaction. First order reaction. In this case, we are having some A that is giving you the product P, but now the rate of reaction, it is equal to the constant rate constant K into A to the power 1. I know. So in this case, I can write K will be equal to the rate of reaction divided by the concentration of A. What is the unit of rate of reaction? Tell me, guys, what is the unit of rate of reaction? What is the unit of rate of reaction? What is the unit of rate of reaction? कोई जवाब नहीं देते हैं, क्या है? Aisha, I can't hear you. Can anyone hear Aisha? ये मेरे में दिक्कत है. Can anyone hear Aisha? No, sir. मरियम पार्कर नहीं है. देखो ये बहुत, I don't know why you guys are not interacting now. A rate of reaction always has unit. ये लिखा हुआ फिर भी आप लोग नहीं बोल रहे हैं. क्या बोले? आप भाई साहब, मेरा तो फिर मूड ऑफ हो जाता है जब आप आंसर नहीं करते, तो क्या ही फायदा. लिखी हुई चीज है, आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं. कंसंट्रेशन इज टेकन एज मोल्स पर लीटर, यहाँ पे मोल्स पर लीटर आ जाएगा. मोल से मोल कैंसिल, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कैंसिल, द यूनिट ऑफ के विल बी इक्वल टू सेकंड इनवर्स. आप तो बोलिएगा नहीं तो आंसर. इट वाज स्क्वायर, तो हम इसी को 2 बार लिख दे रहे हैं. ठीक है, तो स्क्वायर ना उसको 2 बार लिख दिया. सो मोल से मोल कैंसिल, लीटर इनवर्स कैंसिल. Now you will have the rate constant K will be equal to this mole will go above, it will become mole inverse. Liter inverse will go above, it will become liter. Second inverse is in the numerator, it will be second inverse itself. Please write this down. Raise your hand once you're done.
with so you can write the conclusion here. Please just see, don't write now. We'll write the order. I will write the unit of K. जीरो ऑर्डर के लिए बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ के. ये आंसर आना चाहिए यार, मतलब दिस इज, फिर आप जिद की हद हो जाएगी कि आप लोग को बोलना ही नहीं है ना. बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर. मोल पर लीटर पर सेकंड. मोल पर लीटर पर सेकंड. व्हाट इज द यूनिट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर. पर सेकंड. Tell me. Second inverse, right? Hello, am I audible, guys? Yes, sir, you're audible. Okay. What is the unit for the second order? Per milliliter per second. Mole inverse liter per second. ठीक है. Mole inverse liter per second. Please see here. Now I am going to generalize it. ठीक है, थोड़ा सा इसको हम जनरलाइज करेंगे. प्लीज लिसन, डोंट राइट एनीथिंग. प्लीज लुक हियर, डोंट राइट एनीथिंग. ओके, I can write this as mole liter inverse whole to the power 1 minus 0 second inverse. करेक्ट है ये सुनो प्लीज. टेल मी 1 minus 0 कितना हो जाएगा. मोल की पावर 1 मोल liter inverse into 1 की पावर to be same thing. I can also write the second inverse. Second inverse ऐसे ही हो गया, mole liter inverse to the power 1 minus 1. For this I can write this as mole liter inverse whole to the power 1 minus 2, and second inverse is as it is. From here you can see that. सबसे पहले tell me, raise your hand if you have any doubt in one of these following generalization. Raise your hand if you want me to explain any of these generalization. दो लोगों का हाथ रेज था फॉर दी, मतलब हुआ या नहीं हुआ. उसके बाद अभी यू कैन रेज हैंड इफ यू हैव प्रॉब्लम विद द जनरलाइजेशन. अगर आपको समझ में नहीं आया है कि 1 minus 1 कैसे आ गया, क्या मतलब से इसको 1 minus 2 कैसे आ गया, लाइक हाउ आर दीज टू सेम. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन रेज योर हैंड. आई विल वेट फॉर 10 more seconds. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3. Mariam Khatun, can you please turn your mic on? Yes. कौन सा वाला बताइए, कौन सा एक्सप्लेन करें, सारा ही या फिर कोई एक सा. कौन सा समझ में नहीं आया, साफ साफ थोड़ा बोले. कौन सा लास्ट वाला इसी के. लास्ट वाला ना, ठीक है. देखिए यस, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, मोल लीटर इनवर्स 1 minus 2 कितना हो जाएगा मरियम. 1 minus 2 will be equal to -1. -1 सेकेंड इनवर्स. ठीक है, अब सुनिए जरा. देखिए आपके पास ऐसे है, 2 है और 3 है और पावर में -1 है. तो ऐसे हो जाएगा ना, 2 into 3 एंड पावर में -1. तो क्या लिख सकते हैं, 2 to the power -1 into 3 to the power -1. ऐसे लिखेंगे, करेक्ट है ना. ठीक है, अब देखिए जरा, अब जो पावर के पावर ऊपर पावर रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है. तो मोल के पास क्या पावर है, 1 है. मोल इंटू -1 क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर में -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 विल बी इक्वल टू 1. तो लीटर पे पावर 1 और सेकेंड इनवर्स रहेगा. गॉट इट. ये सुनो प्लीज. टेल मी. सर इसमें फर्स्ट वाला में सर 1 minus 1 है सर. जीरो ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर में नहीं सर, फर्स्ट ऑर्डर में. हाँ सॉरी हाँ, फर्स्ट ऑर्डर में ना 1 minus 1. तो देखिए ये अगर हम इसको एनीथिंग टू दी पावर, ये जीरो हो जाएगा है ना. यस. और एनीथिंग टू दी पावर 0 इज इक्वल टू, anything to the power 0 will be equal to how much, Mariam? नहीं पता. 2 to the power 0 is equal to how much? 0.
ये सब चीजें आने, 1 होता है एनीथिंग टू दी पावर 0, 7-8 क्लास में एक्सपोनेंट्स पढ़ाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, भले ही आप लोगों ने नहीं पढ़ा, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी हुई हो, और इट इज इंपॉर्टेंट। या 7th 8th क्लास में जो एक्सपोनेंट्स के रूल है ना, उसको दोबारा से देखिए, कुछ सवाल बना लीजिए, ताकि ये चीज में आपको सोचना ना पड़े। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आपको नहीं आता, हो सकता है ऐसा, इसमें कोई मतलब ऐसी बुराई की बात नहीं है, बुरी बात है ना, तो हम आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहे किसी को। आई हैव सीन स्टूडेंट वो हर साल रहते हैं, इनको मतलब ऐसा समझ में नहीं आता है, याद नहीं रहती ये चीज, है ना। अब हमने जैसे बोला तो आपको याद आ गया, करेक्ट मरियम? Yes, sir. लेकिन आप क्या कीजिए, 7th 8th का पीडीएफ निकालिए, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसको प्रैक्टिस कर लो। इसके बारे में आपको ना सोचना भी ना पड़ना चाहिए कि 2 टू दी पावर एनीथिंग टू दी पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। बात समझ में आई मरियम? Yes, sir. जिन लोगों को थोड़ा सा अटका था ना यहाँ पे, उनके लिए दिया है, आयशा, पारकर, राबिया, सिद्रा। अगर आप एक्सपोनेंट्स में अटक जा रहे हो सकता है ऐसा, आप लोगों का कुछ पार्ट ऑफ एजुकेशन वाज ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब स्कूल नहीं हो रहे थे, तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कुछ गैप्स होंगे वहां पे नॉलेज के, तो वो गैप जैसे ही दिखे आपको उसको फिल कर लेना चाहिए, ठीक है, अभी उस पर आपको काम कर लेना चाहिए। यू कैन नॉट, मतलब उसमें आप ना आपका कोई गलती है ना ही किसी दूसरे का, मतलब वो ऐसा टाइम ही था, तो मतलब मेरी बहन 10th में, उसको भी हम पढ़ा दिए तो आ गया, उसके बैचमेट्स हैं उनको नहीं आता, बहुत सारी चीजें नहीं आती, तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन हाँ, जैसे ही आपको गैप्स अभी मिल रहे हैं कि हमको इसमें अटक जाते हैं इस मैथ्स की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो तुरंत ही एनसीईआरटी का लिए आप पीडीएफ गूगल कीजिए, आपको एनसीईआरटी का पीडीएफ मिल जाएगा उस चैप्टर का, एंड ट्राई टू डू ऑल दी एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप जैसे जैसे गैप मिलते जाए, 15-20 मिनट आधा घंटा आपको टाइम देना पड़ जाए, ठीक है। अच्छा सुनिए जरा यहाँ पे मरीज आपको, एनीथिंग टू दी पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, सो दिस होल थिंग विल बिकम 1, करेक्ट है, and 1 into second inverse will be equal to second inverse only, करेक्ट। अब ऐसा हमने क्यों लिखा है उसको ध्यान से समझिए जरा। इफ यू राइट इन दिस पर्टिकुलर फैशन, देन यू कैन सी दैट 0 ऑर्डर के लिए यहाँ पे देखिए ऐसा आ गया, 1 ऑर्डर के लिए देखिए यहाँ पे ऐसा आ गया, और सेकंड ऑर्डर के लिए ऐसा आ गया। सो इन जनरल अगर यू आर हैविंग, इफ ऑर्डर इज गिवन, इफ इन जनरल इफ ऑर्डर इज गिवन, आपको क्या दिया हुआ, ऑर्डर इज गिवन in the question, and they are asking you regarding if order is given, and order आपने मान लिया क्या है, order equal to n, पर आपको पूछा है कि रेट कांस्टेंट का यूनिट बताओ, then you can say unit of k will be equal to mole per liter to the power 1 minus n second inverse, ठीक है। अब दूसरी चीज जनरली जो होती है ना, रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया रहता है, they will ask you order, if rate, if unit of rate constant is given, if unit of rate constant is given, ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर विल बी इक्वल टू पावर ऑफ एल, देखिएगा आप, पावर ऑफ एल, उसमें एक ऐड कर दीजिएगा, जैसे -1 में 1 ऐड कीजिए, कितना आएगा आंसर, -1 में 1 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा आंसर, बोलिएगा। -1 + 1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, इतना टाइम, -1 + 1 कितना होगा, 0. फिर ऑर्डर आ गया, है ना। अच्छा, व्हाट इज द पावर ऑफ एल हियर, यहाँ पे पावर ऑफ एल क्या है सेकंड इनवर्स में, इज एल, अगर एल नहीं है ना तो एल टू दी पावर 0 है, बात समझ में आ रही है, ये सर नो, है ना, बोलो भाई, Yes, sir. एल टू दी पावर 0 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे आप, 0 में ऐड कर दीजिए 1, so you will get 1 here, the what is the power of L here, what is the power of L here, यहाँ पे क्या पावर है L की, 1. क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है, ऑर्डर आ गया, ये सर नो पिक्सल में कहीं, बोलो भाई, Yes, हो sir. जाएगा, ठीक है। चलिए प्लीज राइट दिस डाउन, कॉपी इट, आराम से बिल्कुल सारी चीजों को कॉपी कीजिए, एंड देन रेज योर हैंड वंस यू आर डन। के बाद फिर सवाल ही सवाल, ठीक है।
Khatun is done. Waiting for others. Please raise your hand once you're done. Waiting for Aisha, Parker, Rabah, Parker. Waiting for Aisha and Rabah. Okay. Everyone is done. ठीक है. You write this question. Send the answer on the Zoom chat. Also, once you are sending the answer, ना, please make sure that आप number दे रहे हैं question का. First का answer ये, second का answer ये. I've got 4 answers till now. Parker, first one is wrong. Second one is correct. Aisha, first one is correct. Second one is also correct. जब Parker ने अपना first वाला change कर लिया, ठीक है. Parker, now the first one is correct. I'm waiting for others. Please answer quickly. Sidra has answered. Sidra, both the answers are correct. Very good. So Rabia has not answered. Rabah has not answered till now. Varyam Patoon has also not answered. Please answer quickly, guys. इतना time नहीं लगना चाहिए. Okay, guys, you can lower your hand. All of you, please lower your hand. Okay. Now raise your hand if you are having difficulty in this question. Raise your hand if you are having difficulty in this question. I will give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, राविया का आंसर आ गया. मरियम, रबा आंसर नहीं आया आपका. मरियम खातून, आपका भी आंसर नहीं आया. क्यों नहीं आंसर है हमको समझ नहीं आया. मरियम खातून, आपने you have said it to whom? Sir, WhatsApp पे भेजा. हम जूम चैट में बोल रहे थे ना. फिर ठीक है, सॉरी, माजरत चाहते हैं. रबा, आपका आंसर नहीं आया है. Sir, the first Very good. one is 2. एक बार चैट में क्यों नहीं बता रहे आप. एक सेकंड, चैट में क्यों नहीं बता रहे आप. Sorry. अरे वो हम नहीं बोल रहे. आप क्यों. अरे यार, हम पूछ रहे हैं आपसे, चैट में क्यों नहीं बता रहे हो आप. ये बताओ. हमने बोला ही नहीं कि चैट में बताओ आपको. हम आपसे पूछ रहे हैं आप चैट में क्यों नहीं बता रहे. ये बताइए आप पहले. हाँ रबा. Sir,
याद नहीं रहा चार्ट बताना, सॉरी। वो अभी आई डिड कंप्लीटेड इट। हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम। आप बोलिए बोलिए, एल इज एल प्लस वन हो जाएगा ना। एल है कितना, पावर ऑफ एल इज इक्वल टू वन, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू। हियर एल की पावर कितना है जीरो प्लस वन, तो जीरो प्लस वन विल बी इक्वल टू वन। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, चलिए लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। This is from this year boards paper. इतने आसान सवाल आते हैं बोर्ड्स में ना केमिस्ट्री के, तो मतलब आसान नहीं आते इन द सेंस, बहुत सिमिलर सवाल आते हैं बोर्ड्स में। ठीक है, मतलब वो एनसीईआरटी के लेवल से नीचे रहता है सवाल। सारे सवाल आप देख लीजिएगा ना, एनसीईआरटी का जो टफेस्ट सवाल रहता है उससे जनरली जो लेवल रहता है नीचे रहता है, तो एवरेज से भी नीचे रहता है। एनसीईआरटी का एवरेज सवाल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज बहुत सारी डेटा उसमें नहीं दी रहती है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया रहेगा वगैरह वगैरह चीजें। Unit of rate of reaction is same as that of the rate constant for। उन्होंने बोला हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन का और रेट कांस्टेंट का यूनिट कब सेम होता है। ये जब सेम होता है तो ऑर्डर क्या होगी। Send me your answers in the chat please। The unit of the rate of reaction is the same as that of rate of constant for a और क्या होगा हमारे यहाँ, तो मैंने बोला यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम एज दैट ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब कौन से ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम होता है। यस, पार्कर करेक्ट, सिद्रा करेक्ट, राबिया करेक्ट, वेरी गुड। Raise your hand if you did not understand the question. Raise your hand if you did not understand the question. Aisha, can you please have your mic on? Aisha, बताइए रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है हमेशा, है ना नोट्स में लिखा हुआ। बोलिए मोल, देख के बताइए क्या मोल, उसके बाद अरे हम समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, थोड़ा साफ साफ बोलिए ना, डर की क्यों बोल रहे हैं। यस आयशा, मोल पर लीटर पर सेकंड। क्या इस तरह का यूनिट किसी भी ऑर्डर पे है, देखिए लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स है ना आपके पास, ऑर्डर एंड देन यूनिट, ये है कहीं